So, hello everyone. I am Monalisa, and here we are again with few more questions of the day. So, our first question is: I will have a brief of what are the questions. Means Lewis concept. What is one mole? What are orbitals? Hell's law, carbon bonding. Uh, why is delta U zero in isothermal process? What does delta H mean? And what is the orbital configuration of calcium? So these are few questions which we will be discussing today. And these questions will allow us to understand chemistry well. So let's proceed with the first question, that is, why do we need to classify elements? Why was there need of classifying elements at the first place, right? So we know what are elements. So I will prefer going hand in hand, explaining and writing. So in 1800, we had 31 elements. In 1865, around 1865, we had 63 elements. And as time passed, right now we have around 114 elements, and out of them 112 and 113 are man-made elements. Like these are newly discovered elements. So the purpose of classifying elements was, at the starting we had less elements. So it was easy to locate, easy to refer, easy to cite. But as time passed, the elements increased. So it's eventual that it was difficult to cite. Hence, there was need of classifying elements. And on what basis were the elements classified? Elements were classified on chemical properties. Okay. Chemical properties. On this basis, the elements were classified. So this was the major reason of classifying elements. We can even understand this in a way like when we go to a supermarket, right? So if the supermarket has everything mixed, like the groceries, the daily supplies, the daily usage items and the clothes. If everything is mixed in the supermarket, if the beverages, if the groceries, if the clothes, if everything is mixed, it will be hard to decide, hard to find out. But if everything is neatly, clearly organized, systematically classified, then it will be easy to plot. So with a similar logic, there was a need of classifying elements. So I guess the purpose of classifying elements is clear to us now. Next question was about Lewis theory of acids and bases. Lewis theory, the first thing of when we talk about Lewis theory is we remember the dots, right? We for example, there is carbon. To show its valency, we use dots. We used dot like this, right? If you can remember, this is how the bonding, everything is started. The bonding, everything is started in chemistry. So इस हिसाब से देखा जाए अगर तो लिविस थियरी, इसमें हम बात करेंगे बेसिकली एसिड्स एंड बेसेस के बारे में. सो लिविस थियरी के हिसाब से एसिड का क्या मतलब होता है? एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन वेरी क्लियरली, दैट एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. और बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ऑब्वियसली. So to understand this, we will take an example. Okay. We know हमको H2O plus NH3. We know this reaction, right? H2O plus NH3.
क्या रिएक्शन होता है इसका? We'll get OH minus और NH4 plus. So अगर इस रिएक्शन को हम गौर से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O का कॉम्पोजिशन क्या है? H प्लस OH माइनस, और NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? N, it has 3 hydrogen and a pair here. So जो H plus है वो ये लोन पेयर से बॉन्ड बना के OH minus will be left. So that is how we get OH minus and NH4 plus. So इसमें क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, दैट इज NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया टू H minus to H plus. So it has become, NH3 has become a base now, ना? और जिसने एक्सेप्ट किया, किसने एक्सेप्ट किया? OH minus plus NH4 plus. This will be on product side. So Lewis theory basically ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस है। NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, so it is a base, as simple as that. So this is how we classify or we talk about acids and bases in Lewis theory. And next question ये था, ये है in our list की, what is 1 mole? 1 mole का क्या मतलब होता है? For example, when we talk about eggs, let's say we are talking about bananas, right? Let's say we are talking about bananas. What do we say to the shopkeeper? Give 1 dozen bananas. And what does 1 dozen mean here? 1 dozen का क्या मतलब होता है? 12, right? 1 dozen bananas. 1 dozen equal to 12. So 12, it is a number. So dozen is representing a number. So similarly, 1 mole is representing a number. We'll talk about this number. Before that, let me tell you. For example, लेंथ को मेजर करते हैं हम ऐसा यूनिट्स में देखा जाए तो मीटर्स में, राइट? टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम केल्विन में. इस सिमिलरली मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में मेजर करते हैं. सो जैसे अभी हमने बात किया कि जो हमारा 1 डजन 12 को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 power 23. This is also a number, and we call this number as Avogadro's number, represented by n. Okay, this is represented by n. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दुनिया में इतने सारे नंबर्स हैं, फिर भी हमने 1 मोल इक्वल इतना ही क्यों चुना? Of course, it is founded by Avogadro. It is said by Avogadro. Still, because इसका सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो अगर 1 ग्राम ऑफ H लिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ H होता है. सो ये ग्राम वेट को भी रिप्रेजेंट करता है. So that is the reason we have taken 1 mole equal to 6.022 into 10 power 23. It is nothing but a number, just like we said dozen, just like there is a unit to measure
length, temperature. Similarly, it is a unit or it is a way of quantifying molecules, and the number is 1 mole. Mole represents 6.022 into 10 power 23 numbers. So this is how. Okay, and next question is, so we have discussed 3 questions till now. Let's talk about next question. It is about orbitals, right? Before understanding orbitals, let's talk about Niels Bohr. You know him? We are familiar with him. तो अगर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करने से पहले वी शुड नो कि शेल क्या होता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. शेल क्या होता है? व्हाट इज अ शेल? एज सेड बाय बोर, fixed path around the nucleus where electrons revolve, that is a shell. इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है? रिवॉल्व करता है. ओके, तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये अपने पाथ्स हो गए. थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसको. अब हम बात कर रहे हैं शेल के बारे में. ये हमारे पाथ हो गए. तो इसलिए क्या होगा? ये जो अपना न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको हम ऐसे नंबर करते हैं कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और इसका नाम है KLM. दिस इज नथिंग बट नेमिंग. कुछ टिपिकल चीज नहीं है, इट्स अबाउट नेमिंग. कि ये जो पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हैं, उसको हमने नेम नोमेनक्लेट किया कि n इक्वल टू 1 k को रिप्रेजेंट करता है, k शेल, l शेल, m शेल. ओके, सो शेल्स कितने हैं? k, l, m, n, विच वी बेसिकली टॉक, राइट? इसके बाद अपने पास होते हैं सब शेल्स. एंड व्हाट आर दीस सब शेल्स नाउ? सब शेल्स इज नथिंग बट k के पास होते हैं s सब शेल होता है, k के पास. l के पास होता है s और p सब शेल. d के पास होता है s, p और d सब शेल. सिमिलरली अब बेसिक अपन बोल सकते हैं कि n के पास होता है s, p, d, f सब शेल, राइट? इस हिसाब से सब शेल्स आर नथिंग बट शेल के पास. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि k, देन यू विल डेफिनेटली रिमेम्बर s सब शेल होता है उसके पास. l के पास होता है s और p सब शेल. और हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, when I say 1s, what am I referring to? k shell or s sub shell. 4s, what am I referring to? Fourth shell, s sub shell, right? Or when I say 2s, for example, 2s I am saying, so what am I talking to? 2 represents L shell, S represents its sub shell. As simple as that. And does 1p exist? No. Why? Because k के पास एक ही सब शेल है, वो है s. So how come p be there, right? Does 2d exist? No, 2d doesn't exist. Why? Simple, because 2d के पास 2 मतलब क्या होता है? L shell. L shell के पास d सब शेल है नहीं. So how can we represent this? No, right? This is clear. Shell or sub shell are clear. Now, what are orbitals? So S has 1 orbital. P has 3 orbitals. D has 5 orbitals. And what are these orbitals?
Orbitals are nothing but the regions of subshells where probability of finding electron is maximum. तो s का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का, क्योंकि उसके पास एक ऑर्बिटल है. p का कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने का, क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिटल्स, राइट. So we understood what are subshells. This is how electronic configuration का बेस ही shells, subshells और orbitals है. अगर हम बात करें कि मैं बोलूं 1s, 1 का मतलब होता है k shell, s is a subshell, it can hold 2 electrons max. Okay, this is how we go. Next, we are clear with what are orbitals, right? Now let's talk about Hess law. This is the next question, question number 5. This is very prominent in thermodynamics, right? Hess law. This is the most, ऐसा है कि इसका अगर हम फुल फ्लेड्जेड नाम देखें, Hess law of constant heat summation, इसके नाम से ही we can know what is its function or what does it mean. Of course, it's given by Hess law. Hess law का ये कंक्लूजन है, ये कंफर्मेशन है कि मतलब इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स ऑल अबाउट? Thermodynamics is all about systems surrounding, right? So let's assume a system, let's say A, okay, and it wants to go to B state, मतलब B system, A को B में convert करना है, whatever may be the properties, we are not concerning about that right now. तो A को अगर B में convert करना है, तो we need to give it some energy, right? We need to give it, for example, Q energy. So Q heat, basically. So this process can directly happen A to B, right? A से B directly जा सकता है, नहीं तो if not A से C जाएगा, C से D जाएगा, D से B जाएगा, और Q1 समझो हीट, C में भी लगेगा Q2 और D से 3. तो है यह है, तो Q है कैपिटल Q, maybe the process is happening in 1 step, 2 steps, 3 steps or 4, 5, 6. We are not concerning about the number of steps the process is happening in. The total heat will be the same. तो A से B जाने में Q heat लगा, Q, तो A से B, A से C, C से D और D से B इन स्टेप वाइज जाने में भी इतना ही लगेगा, Q1 plus Q2 plus Q3, right? This is what Hess law is all about. This is as simply we can decode it. तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, so you can digest this fact, which is by common sense also हम बोल सकते हैं ये बात. Still, this is a very common example which we see कि जो हमारे पास CO2 बनने का प्रोसेस होता है, एक ऐसा वे हो सकता है कि C सॉलिड स्टेट से हाफ O2 से रिएक्शन हुआ, O2 गैस फॉर्म से, और CO फॉर्म हुआ, और इसमें H लगा -111.5 किलो जूल, ओके. और एक प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि CO है, नहीं इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन, आई मीन CO, अब ये CO है, इसको CO2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? CO को फिर से हाफ O2 से रिएक्ट करवाएंगे, ग्राम, आई मीन CO गैस को हाफ O2 गैस से रिएक्ट करवाएंगे तो हमको CO2 मिलेगा, राइट? अब इसमें कितना H लगा? -282 किलो जूल, ओके.
और एक तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली, दिस इज सेकेंड वे, कि डायरेक्टली जो सी सॉलिड में था उसको O2 से रिएक्ट करवाए और डायरेक्टली CO2 फॉर्म हुआ। इसका क्या एच है? -393 किलो जूल, राइट। और ये जो 2 स्टेप्स में प्रोसेस हुआ उसका भी अगर हम समेशन करें तो ये भी आएगा हमको 393 किलो जूल, -393 किलो जूल। सो दिस इज व्हाट हेल्स लॉ इज ऑल अबाउट, कि अगर प्रोसेस 2 स्टेप में हो उसमें Q1 Q2 एनर्जी लगे, या फिर प्रोसेस 1 स्टेप में हो उसमें कैपिटल Q एनर्जी लगे, the sum of the Q, small q1 q2 will be equal to the capital Q. Okay, right. So this is all about Hess law. There are many these questions in competitive exams में बहुत questions आते हैं Hess law के. This is a simple law and most used one. Okay, Krish. Okay, let's proceed to the next one. Next question ये है कि कार्बन बॉन्डिंग क्या है? Our organic chemistry is all about carbon bonding. If we say, what is carbon bonding? This is our question number 6. अच्छे से लिखते हैं. Okay, carbon bonding. So first carbon, we know what कार्बन रिप्रेजेंट होता है C से. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? What is atomic number of carbon? What is the valency of carbon? What is the weight of carbon? Right? 6 is atomic number. 12 ग्राम इसका weight होता है. इसकी valency 4 है. Right? These are few things we know. So carbon has valency 4, मतलब it can form 4 bonds, single bonds. तो कार्बन बॉन्डिंग अगर हम बात करें तो ये we know CH4 फॉर्म हो सकता है, सिंगल वैलेंट. ये कैसे फॉर्म होगा? अगर C को 4 बॉन्ड्स है, दिस इज और H का H has one valency, तो this H, the one valency of H and this one valency, one electron of carbon will form a bond. तो दिस इज सिंगल वैलेंट है. दिस इज मोनोवैलेंट. हाइड्रोजन मोनो मतलब एक वैलेंसी जिसका होता है मोनोवैलेंट. सो ये एक वैलेंसी के साथ फॉर्म हुआ बॉन्ड. और एक हो सकता है कि जिसका वैलेंसी 2 है उसके साथ फॉर्म किया बॉन्ड. जैसे CO2 कैसे फॉर्म होता है? टेल मी. ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8. तो उसका वैलेंसी क्या है? 2,6 उसका कॉन्फिगरेशन होता है, राइट. तो उसका वैलेंसी हो गया. तो कार्बन का 4 होता है, 2 O2 हुए. तो अब क्या होगा? कार्बन इनके साथ फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड. कैसे? दिस एंड दिस, एंड और ये जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, those will also form bond. So basically
जो कार्बन है, the valence of carbon is 4 and the valence of oxygen is 6. So the bond formed by CO2 will be double bond, right? So ये हो गया 2 जो डाइवैलेंट और होते हैं उनके साथ कैसे फॉर्म हुआ बॉन्ड. Now when we talk about the one which has, how does triple bond form, right? ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? Triple bond of let's talk about triple bond. HCN. We know HCN. HCN is a very prominent molecule, right? So what are the elements in HCN? HCN के पास है there is hydrogen, carbon and nitrogen. Also जो CO2 है उसमें अभी कितने पेयर्स बच गए? It has 2 pairs, right? Like this. तो HCN की बात करें तो हाइड्रोजन हैज 1, कार्बन के पास एज यूजुअल 4 होते हैं. दिस इज गुड रिप्रेजेंटेशन ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. इसके पास एक होता है और जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 5 is the configuration. मतलब 5 electrons are there. So what we can represent? 1 2 3 4 5. It needs 3. Nitrogen needs 3 more electrons, right, to attain octet. तो जो और एक अपना ये वाला है उसको हम इधर ला लें और more 3 if this is how things go, we can see कि nitrogen और carbon will form triple bond and this will form one bond because nitrogen needs three more electrons. So each one should share 3. Sharing का क्या मतलब होता है? If I give 3, you should also give 3. That is what sharing is. So three electrons from carbon and 3 from nitrogen together. This way octet is attained. So when we talk about carbon का बॉन्डिंग कैसे होता है, वो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, मतलब 2 बैलेंस जिसका है, 3 बैलेंस जिसका भी हैव सीन कि कैसे कैसे होता है, राइट? So this is how, and this is also one of the reasons कि carbon can also form bonds with carbon. Do you know that? Of course, like that this property of carbon is called catenation. उसीलिए तो C60 बनता है, राइट? सॉकर बॉल जिसको बोलते हैं. So इसीलिए तो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? So carbon, that is the reason carbon organic chemistry में the most prominent element मानते हैं. Not only because it forms bonds, but also it can form bond with itself. Okay. Next, proceeding forward. Let's proceed forward. Let's talk about next question, that is isothermal process.
Isothermal. So tell me, what do you understand by isothermal? As the name suggests, isothermal मतलब सेम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है उसे हम बोल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. मतलब देयर इज नो चेंज इन temperature. That is isothermal process. Let me draw this PV graph of P or V. यहाँ T1 and T2 is 0. The difference between T1 and T2 is 0. So this is isothermal process. And now the question is, isothermal process में delta U Q 0 है. What is the relation between the isothermal process and delta U being 0? What is delta U? Delta is nothing but an internal energy. Why is internal energy 0 in isothermal process? So for this, we should refer to our first law of thermodynamics. What is first law? That is delta Q is equal to delta U plus W is first law, right? So energy can neither be created nor be destroyed, can just be transformed. So the delta U, why is it 0? Now, you know, internal energy किस किस से बनता है? अगर मैं एक बीकर लूं, उसको हीट करूं, जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको कुछ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. तो डेल्टा यू इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. बट अगर टेम्परेचर का चेंज ही नहीं हुआ है, तो हाउ कम देयर बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट? हीट ही नहीं हुआ है तो इन एनर्जी जनरेट ही कैसे होगा? मतलब हीट का चेंज ही नहीं हुआ है. तो दैट इज द रीजन कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 in isothermal process because there is no temperature change, and that is the reason delta Q equal to work done in isothermal. So this is a simple way you can understand this, right? We will be talking about internal energy. It is also one of the questions. Like internal energy is nothing but potential energy plus kinetic energy. That is what we call as internal energy. So there is no change in temperature, resulting in no change in kinetic energy or potential energy. So no excuse me. So the no change is resulting in delta U equal to 0. Eventually delta Q will be equal to work done. So that is the reason why in isothermal process there is no change in internal energy. So let's proceed to the next question. The next question is about enthalpy. What do you understand by enthalpy? Enthalpy, when we talk about enthalpy, we relate enthalpy with heat mostly. Whenever we hear enthalpy, we talk about heat. Enthalpy is nothing but the heat measurement of total heat present at constant pressure. At constant pressure, kitna heat is there? That is enthalpy. I repeat it once again. The measurement of total heat present at constant pressure is what we call as enthalpy. Enthalpy is represented by delta H. And best thing you should know about this is the relation between enthalpy and internal energy is very interesting. Like when we heat something, we are heating something, we are producing some temperature change, right? So when we heat, there will be generation of kinetic energy and potential energy, right? So delta U will be there. We are producing heat and delta U will be there and some work will be done. For example, if you're feeding a animal, like if you're feeding a donkey, we are giving it some energy and it will do some work. And this both will summationally result in
in a quantity, right? We are heating, तो एनर्जी चेंज होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, और क्या होगा, वर्क विल ऑल्सो बी डन, जो एनर्जी होगा वो वर्क में यूटिलाइज होगा ऑफ कोर्स. सो जो डेल्टा एच है वो होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वर्क डन. सो अगर इसको और अच्छे से समझे, जो एंथैल्पी होता है वो एक path independent process है. So it is a state function. It does not depend on the path. And also it is extensive property because it is amount dependent. Like if there are more elements, more molecules, matlab delta H will be more heat, less molecules, delta H will be less. As simple as that. So what are we meaning to say? जो delta H है, it is nothing but heat measurement at constant pressure. And it's a state function as well as extensive property. One more thing here to note is delta H जो होता है अगर वो greater than 0 है, so we call it as endothermic process. Why? Because heat is released. Sorry, heat is absorbed. Endothermic. And delta H less than 0, exothermic. As the name suggests, exit हो रहा है. Exit क्या हो रहा है? Exit. Heat is emitted. Heat is given out. Right? So this is what you need to know about enthalpy. Basically. The next question ये था कि orbitals of calcium. The question was about Ca orbitals. So let's talk about Ca orbitals. अगर हम calcium, when we talk about calcium, we should remember its atomic number. What is atomic number of calcium? It is 20. What is atomic weight of calcium? It is 40. So when we talk about the configuration of calcium, let's write the configuration of calcium. Okay. Ca, calcium, it has the atomic number 20. 20. So 1s2, we know how to write electronic configuration. SSP, SSP and SPS. DPS. This is how we proceed, right? You know it. If not know it now, I'll explain a bit more about it. Just a second. For example, remember this SSP, SPS, DPS. This is how filling of electrons will go on. So 20. So 1s2, 2s2, 2p6. 10 electrons are filled, 10 more are there. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So 20 electrons are filled, correct? So when we talk about the representation, what do we mean? जो हमारे last orbitals है, we usually represent the last, right? So the 3p has 6 electrons. We have represented 6, and the 4s has 2 electrons. We have represented. So this is how we represent orbitals of calcium. If this is what is meant by the question, right? So not only the major thing to understand in this is how we are filling. SSP, SPS, DPS. This is how we proceed in filling. Okay. So next question when we talk, it is about key. When we are given
2.4 grams of NaOH. This is the next question. 2.4 grams of NaOH is given. Let me read out the question so it will make more sense. Molarity of a solution prepared by dissolving 2.4 grams of NaOH in 100 ml of water. So we need to find molarity. So whenever a term is given to be found, first write its formula. First of all, what is given? 2.4 gram NaOH is given. 100 ml of water is given, right? Write it in the chemical composition, like H2. Now, 2.4 grams, we need to find the molarity. What is molarity? It is nothing but we have a formula of molarity. M is equal to, M here representing molarity, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. This is important. And when we talk, this is molarity, and when we talk about molality, as with occasion I am telling कि अगर हम molality की बात करें, that is weight of solution in kg. So here unit is important. कि molarity is equal to number of moles of solute by N. Let's represent it by N of solute by volume of solution in liter. Okay. Now tell me, how do you find number of moles of solute? What is solute here first of all? NaOH is a solute. So given weight by molecular weight. Given weight by molecular weight is about number of moles. What is the given weight? Given weight is 2.4 grams by what is the molecular weight? NaOH. Na. Let's find the molecular weight. Na is sodium. It has 23 weight plus oxygen has 16 plus 1. Total 40. So 40 grams is the weight of NaOH. This should be by heart for you. So if somebody is doing it for the first time, in that उस scenario से बता रही हूँ मैं. This should be by heart. NaOH has this so and so weight. So 40 moles आगे. Now volume is given. Volume of solution 100 ml. How do you convert ml to liters? Ml to liters, we need to multiply by 10 power minus 3. 100 ml equal to 1 liter, right? So with this data, we have 2.4 into 2.4 divided by 40 into what is the volume? 100 into 10 power minus 3. So we will get molarity by calculating this. So I guess you will be doing it, right? This will be cancelled. 0.6. And do you know what are the units of molarity? Molarity. Also, sometimes we can decode the options by seeing the units, right? So you should know units. Like we are talking about simply by formula, you can say we are having moles in the numerator and liters in the denominator. So units are mole per liter. As simple as that. So we have talked about molarity. So we have covered why do we classify elements, Lewis theory, ketone, preparation of aldehydes. Let's talk about preparation of aldehydes now.
Let's talk about the organic chemistry part. What do you mean by aldehydes? Aldehydes or ketones, when we talk about them in relation, right? We talk about them hand by hand. मतलब simultaneously हम उसकी बात करते हैं. There are many ways. These are called carbonyl compounds, aldehydes and ketones. जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है उसको अल्डिहाइड बोलते हैं, और जो कार्बन ग्रुप से ही कार्बन कार्बन से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप. These are used for nail paint removers. They have strong odor. We know this. Carbon और मतलब कीटोन और अल्डिहाइड की बात करें अगर, तो let's solve it. Let's know it basically. कि method of preparation of aldehydes and ketones. For example, aldehyde की preparation की बात करते हैं. This is basically, you should understand it. To understand पूरा organic chemistry की बात होगा अगर हम understanding की बात करें. But I will give you an overview कि aldehyde की preparation की बात करें तो एक process होता है by oxidation of alcohol. इसमें क्या होता है, जो हमारा aldehyde होता है, let's take 1 degree alcohol. 1 degree अल्कोहल से हम अल्डिहाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड दीज रिएक्शंस हैव अ पर्टिकुलर नेम, कि अगर हम इस रिएक्शन को इस कंपोनेंट से इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो वी विल गेट सो एंड सो कंपाउंड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सो एंड सो नेम. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. अल्डिहाइड प्रिपरेशन के लिए अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं विथ KMNO4 H plus or K2Cr2O2 H plus, let's say KMNO4, then we will get RC double bond O H, right? And when we 2 degree alcohol say भी this is possible. 2 degree alcohol, how are we saying which degree alcohol? Because ये जो कार्बन है वो एक जो ऑक्सीजन OH को अटैच्ड अल्कोहल ग्रुप को अटैच्ड कार्बन है वो एक सी से जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 1 डिग्री अल्कोहल. अगर ये कार्बन दो R से जुड़ा हुआ होता so we would call it as 2 degree alcohol simply. So this also in presence of same groups layer, so this will produce ketone. Okay, this is one way by oxidation of alcohol. अगर 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करें तो अल्डिहाइड आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो कीटोन आएगा. और एक प्रोसेस है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स. डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या होता है, जो हमारा लाइक इथाइल अल्कोहल, लेट्स टेक इथाइल अल्कोहल. व्हाट इज द फॉर्मूला? यू शुड नो, नोमेनक्लेचर आना चाहिए पहले हमको. नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल केमिस्ट्री होता है. तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, दो सी है, इसमें एक ऑक्सीजन है, आई मीन एक OH है, इथाइल हो गया. इसको अगर Cu 573 केल्विन पे हम रिएक्ट करवाएं तो हमें आएगा इथेनॉल, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप. विच अल्डिहाइड विल गेट, ये OH ग्रुप, ये जो H है दिस विल बी रिप्लेस्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल ग्रुप आया. अगर यही हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम डिहाइड्रोजनेशन करें, डिहाइड्रोजनेशन में क्या यूज करते हैं हम, Cu यूज करते हैं. अगर हम यही आइसोप्रोपाइल if we take isopropyl at same 503 Kelvin, we will get CH3 CCH3. What is this? This is nothing but acetone, ketone आ गया. और we can get it from hydrocarbon से भी we can get, right, from
by oxidation of methyl benzene we can get. So this each process has a name, a particular name, like by Gutterman-Koch reaction. What is Gutterman-Koch reaction? This is a very important reaction. Okay, let me tell you. Gutterman-Koch is nothing but जो benzene होता है वो CO और HCl से react करके in presence of AlCl3 and CuCl, we will get benzaldehyde. Clarity के लिए let's write it well. G benzaldehyde. Okay, so this is how we get different by different processes we get different sort of ketones and aldehydes. So we have covered most of the things which we are supposed to do today, right? So on the whole, this is for today. Like we have covered from organic chemistry, inorganic. Mostly we have covered the periodic table, thermodynamics, classification, or organic may we have covered bonding, right? Organic bonding and few processes by which ketone and aldehyde are produced. One of the suggestions here है कि understand these reactions at a first hand, but try to, it's better you know the reactions well. Like क्या इन किसके प्रेजेंस में किससे रिएक्शन होके वी आर गेटिंग व्हाट लाइक गटरमैन-कोच रिएक्शन अभी हम बात करें. सो मेक इट्स बेटर टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन सो वो चीज याद हो जाए. लाइक इवन ऐसा नहीं कि हम वैलेंसी निकालते हुए बॉन्डिंग बनाते हुए इन एग्जाम वी आर डूइंग. बाय सीइंग बाय अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी एबल टू डायरेक्टली से कि दिस इज will be the product, right? This will happen only when you practice it, you revisit it again and again. So this is my suggestion कि जो reactions होते हैं it's better you revise it again and again. You understand it, but it's better you revise it till the point you get it by heart. Okay, so that's all from my side today. Hope you understood. So yeah, thank you from my side. All the very best.